Now the question number 13 is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. Find all the angles of the quadrilateral. उस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स कैलकुलेट करना है. So the solution would be एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं. The angles of the quadrilateral are in this ratio. मतलब 3:5:9:13 रेशियो में है एंगल्स. तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा, लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x and 13x. Let the angles be 3x, 5x, 9x and 13x. So सभी को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए. Angle sum property of a quadrilateral. So we know that 3x plus 5x plus 9x plus 13x must be is equals to 3x plus 5x plus 9x plus 13x. The sum of all these must be equals to how much? 360 degrees. That is angle sum property. Angle sum property of a quadrilateral. Isn't it? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स ऐड करने से 360 आना चाहिए. Now 3x plus 5x is 8x. 8x plus 9x is 8x. 8x plus 9x is 17x. 17x plus 13x is 30x. 30x is equals to 360. x is equals to, ये मल्टीप्लिकेशन में ना इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में 360 by 30. 30x is equals to 360. 30 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में. So x is equals to how much? ये दोनों zeros कैंसिल, 3 1s are, 3 12s are, so 12. ये है 12 degrees. तो x का वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो चारों एंगल्स आ जाएंगे. Therefore the four angles of the quadrilateral are क्या होगा? 3 into x, 3 into 12, 3 into 12 degrees, comma 5x, 5 into 12 degrees, comma 9x, 9 into 12 degrees, 9 into 12 degrees and 13 into 12 degrees. 3 into 12 degrees, 5 into 12 degrees, 9 into 12 degrees, 13 into 12. So therefore 3 into 12 is equals to 36 degrees, 5 into 12 is 60 degrees, 9 into 12 is 108 degrees and 13 into 12 would be 156. 156 degrees. So ये है आपका आंसर. इन सभी को ऐड करोगे तो यू गेट 360 और इन सभी का रेशियो इस रेशियो में होगा.